Good morning, children. Welcome back to the social session. Children, in the last class regarding the industrialization and social change, we have spoken about the coal and iron. In order to bring out pure iron and make it into the roll bars and used for our day-to-day activities, Derby's family in Britain played very important role. The family of a grandfather, father and son, for 3 generations, they tried to introduce different kinds of furnace. ओके ब्लास्ट फर्नेस जो है वो इंट्रोड्यूस करके और बहुत कम कोल बर्न करते हुए दे हैव स्टार्टेड स्मेल्टिंग प्रोसेस. यू नो हाउ द मिनरल्स आर प्रिपेयर्ड चिल्ड्रन. इट इज़ आयरन ओर चिल्ड्रन, नॉट आयरन ओर बोले तो इम्प्योर्ड है. ओके आयरन बोले तो प्योर्ड है. हाउ दिस ओर विल कन्वर्ट इनटू द आयरन देन विथ ए प्रोसेस कॉल्ड एज स्मेल्टिंग बोलते उसको. ये स्मेल्टिंग कैसे करते? ओके इट इज़ ए प्रोसेस इन्वॉल्व्ड the extraction of the original ore. From the ore they divide the impurities and they make the mineral very pure. That process is called as smelting. ये स्मेल्टिंग करने के लिए उन लोगों को कोल का ज़रूरत पड़ती है. कोयला कोल बोले तो कोयला का ज़रूरत पड़ती है. So it was in what we call 1800 and 1830 that in order to produce 1 ton of coal, 1 ton of iron, they have to burn 8 tons of coal. But by 1850, in order to produce 1 ton of coal, they started using only 2 tons of, in order to produce 1 ton of iron, they started using only 2 tons of coal. Today, let us see this revolution, the industrialization, कॉटन स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री में कैसा इन्फ्लुएंस दिखाई. पहले हम जो देखे थे कोल और आयरन के बारे में, दोज आर द बेसिक थिंग्स. इसके वजह से ही और नया मशीन्स तैयार कर सकते हैं. आयरन के वजह से ही वी कैन प्रिपेयर न्यू मशीन्स. अगर आयरन ही नहीं है देन यू कैनॉट प्रोड्यूस द न्यू मशीन्स. यू हैव टू यूज़ द वुडन थिंग्स, इजंट इट. जैसे अर्ली मैन यूज टू यूज़ ओनली द थिंग्स लाइक अवेलेबल बाय द नेचर. ओके by this iron we got the introduction to the iron from the Iron Age societies, and we started using them as a powerful metal. So this has brought a revolutionary change even in the machine making also. So later machines were prepared with the iron and coal was used as a primary source of energy. अभी तक अब भी देखो even in 2010 also we are enjoying this power. electricity जो है वो कोल के साथ ही चारी. कोल थर्मल पावर है. वो थर्मल पावर बोले तो जो इलेक्ट्रिसिटी बाय द बर्निंग ऑफ कोल यू विल गेट, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. पानी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते. अगर सन के रेस के साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो उसको सोलार एनर्जी बोलते. सो देखो अभी तक भी वी आर यूजिंग द कोल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड कमिंग टू द कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग चिल्ड्रन, द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वुवन क्लॉथ जो है ओके ये गारमेंट है. अभी सिलने के बाद ये शर्ट बन गई, मगर पहले जो है वो क्लॉथ है. सो दिस वाज फाइन फ्लैक्स, दैट मीन्स लेनिन क्लॉथ देखे कभी. फाइन flax they used to make. Since the 17th century, what happened, the country had been importing bales of cotton cloth from India at a high cost. So they were importing lot of cotton is largely grown in India, children. So India में से they were importing bales, large bales of cotton. Bale बोले तो मालूम है, जो कॉटन को थैलियों में रखते हैं उसको बेल बोलते. दे विल मेक इट एज अ स्क्वेयर्स एंड दे विल पुश इट. उसमें से सीड निकालते. ओके सीड निकालने के बाद दे प्रेस दैट कॉटन एंड दे मेक इट इनटू स्क्वेयर शेप्स एंड दे विल बी सेंडिंग इट टू अदर कंट्रीज. दे विल बी सेलिंग इट टू द अदर कंट्रीज. वैसे ब्रिटेन ज़्यादा कॉटन बेल्स जो है वो इंडिया से मंगवा रही. As the East India Company's political control was present in different parts of India, it began to import the raw cotton along with the cloth. This raw cotton could be spun, okay, and they can weave it and into cloth, and they can sell it in England itself. They can make all these things in England because England has got that machinery and technology. They can weave a cloth and they can sell it in the England. But England population is very little. ओके इंग्लैंड में बेचने के बाद अगर ख़त्म हुआ समझो, ओके जो खरीदने वाले नहीं हैं, देन व्हाट अबाउट द इंपोर्टिंग ऑफ द कॉटन एंड क्लॉथ फ्रॉम इंडिया. So for that reason they started selling these products which are made in England around the world.
जो जिधर जिधर भी उसके कॉलोनीज़ है उसमें दे वर द रेडीमेड मार्केट्स, और ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स को ले जाके उधर भेजना शुरू करे. So till the early 18th century, spinning had been very slow and laborious work है. Spinning मालूम है आपको? स्पिनिंग बोले तो गांधी जी का चरखा मालूम आपको? स्पिन करते रहते ऐसा चलाते रहते. ओके, वो जो है बहुत लेबोरियस वर्क है एंड इट वाज वेरी स्लो. In a single weaver worked on the yarn produced by 10 spinners. Mostly women are used as a spinster. Therefore, while spinners were busy spinning all day, weavers waited idle. अगर स्पिनर्स स्पिनिंग करे तो ही वीवर को काम रहते. अगर 10 स्पिनर्स काम करे तो एक वीवर का काम होती. सो ये स्पिनर स्पिन करे तक ये वीवर खाली बैठना होगी. इसके वजह से क्या हुआ, वो उसको खाली बिठा के पैसे देने लगे. Then they start idea. Why should we make him to sit ideally? Let us make this spinning more faster so that they'll get sufficient work. बोल के सोचने लगे. इसके वजह से what they have done, they have brought the new technological inventions. The time gap between the spinner and weaver got reduced. The raw cotton into yarn or thread, and the weaving the yarn into fabric. These industries were heavily dependent upon the work of minds or women. They are mostly dependent upon the women and children. बहुत सारे weaving industry में women और children ही काम करते थे factories में. And to make it even more efficient, production was gradually shifted from the houses into the factories, and spinners and weavers to the factories. From 1780, the cotton industry, that is the textile industry, symbolized that British industrialization in many ways. It has got large changes in the industries. This industry had two features which were also seen in other industries, like raw cotton was entirely imported, and large part of the finished cloth was exported to the other countries. That means it is only the production unit and it will be sold in many other countries. Britain had the control over its resources like raw cotton as well as the market where they can sell their cloth. This helped to increase the control over the colonies by the Britisher also. So this is a technology development in the weaving and spinning and textile industry. Tomorrow we'll see about the steam power in the next class, children. Thank you.